Good afternoon, children. Hope you all are taking care of you and your family. Today I am going to teach you about solar system and our mama earth. This concept is not new for you. You all have already studied in class 5. So let's begin. Hope you all are ready with your copy and pen. The first question arises in our mind how it consists. Okay, the sun, head of the family, 8 planets, satellites, other celestial bodies in the vicinities are make the solar system. We can see countless glittering tiny objects in the sky at night. Most of these appear twinkling. They are stars. As we all know, they have their own heat. The stars have their own heat. They radiate a large amount of light. Example, the sun. The other glittering object which do not seem to be twinkling may be planets. During the day, we see the sun, which is also a star. All the objects in the sky which appear similar to us are the heavenly bodies. The sun, the stars, the moon, the planets and other objects are all heavenly or celestial bodies. You would be surprised to know that even our earth on which we live is a celestial body. What are planets? Planets are celestial bodies. They do not have their own heat or light. They are lit by the stars. For example, the earth. The stars and the planets which we see in the sky are very small part of the vast space which is limitless. There are billions of celestial bodies spread over the vast space. Go. They are very far away from us. Hence, we cannot see all of them. The vast, limitless space, which include all celestial bodies, are universe. Now, what is celestial body? The sun, the moon, all those objects shining in the night at sky are called celestial body. Now galaxy. Though there are billions of celestial bodies spread in the vast universe, they are not uniformly distributed in the space. The countless stars in the space from huge cluster. One cluster may contain billion of stars. What is a cluster? A group of things. Yes, you all know that. All the stars in a cluster are held together by mutual gravitational force. Such a huge cluster of billions of stars along with the giant collection of gases and dust is called a galaxy. Now, what is a galaxy? A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. Understood, children? Our Earth, along with the other planets, form the solar system. The solar system is located in the outwards spiral of the Milky Way galaxy, that is also known as Akash Ganga. Most likely, there are billions of other solar systems in our galaxy and billions of galaxies in the universe. As we know, there are different types of celestial bodies in the universe. So, we will learn some of them. Okay? Now, children, this is the introduction and this is enough for today. Read the whole chapter, then I will come to you again tomorrow maybe. Okay? If you have any query till now, text me on WhatsApp. I will reply. Okay? Now, children, I would like to share some facts with you. Listen carefully. Number 1. Only Earth supports life because it has water and air. The temperature is neither too hot nor too cold and optimum to sustain life. Number 2. Pluto is a dwarf planet. Dwarf you know na? Yeah, Bona, Chota. Yes? Though till August 2006, Pluto was considered a planet. Okay. Number 3. Third, light travels at the speed of 3 lakhs km per second and it takes 8 minutes for the light to reach to the earth from the sun. Number 4,
The universe is too big. It is beyond our imagination. Okay, now time for next topic, constellation. What is constellation? Group of stars या group of anything. Okay. If you observe the stars in the clear night sky, they appear to form different shapes and patterns and move from west to east. आप रात में आपने कभी भी, हमेशा ही देखते होंगे, कभी भी क्या, आप जब स्काई की तरफ देखते होंगे स्टार्स जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स लिए आप कुछ इमेजिन करते होंगे, अरे आज तो ऐसा दिख रहा है स्टार, है ना. डिफरेंट पैटर्न्स में हमको स्टार जो है, ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखाई देता है. और किधर से किधर, वेस्ट टू ईस्ट. The formation may resemble animals, humans or any other object. जो formation है उसको आप किसी भी तरीके से आप assume कर सकते हैं. वो resemble करना means मिलना. Animals से resemble कर सकता है, humans से और किसी भी other object से. Okay? So the group of stars which are recognized by their formation are called constellations. ठीक है. many type of patterns हैं, famous हैं in the world, like ursa major, जिसको कि ग्रेट बियर भी कहते हैं हम लोग. ठीक है. देन सप्तऋषि मंडल, आपने 7 तारों का कभी समूह देखा होगा, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, जो कि फेमस है किस नाम से, सप्तऋषि मंडल. लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये 7 महान ऋषि हैं, उनका एक ग्रुप है. ओके. उसको ग्रेट बियर भी कहते हैं, ग्रेट बियर का एक पार्ट उसको कहते हैं. ओके. देयर आर सेवरल अदर formation of stars which have been given name by the astronomers. astronomers कौन होते हैं? जो आकाशीय स्टडीज़ करते हैं, जो आकाश के बारे में स्टडीज़ करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स. और जो ग्रहों पर प्लैनेट्स पे जाके उसकी रिसर्च करके लाते हैं, यस, वो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं. The 2 brightest stars at the head of the Saptarishi Mandal called pointers. सप्तऋषि मंडल के हेड पे ऊपर की तरफ जो 2 ब्राइट स्टार्स होते हैं उनको पॉइंटर्स कहते हैं. और वो किधर पॉइंट करते हैं? वो हमेशा नॉर्दर्न स्काई, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हैं. एंड देयर नेम्स आर पोल स्टार और ध्रुव तारा. ओके. Now pole star lives above the north pole. किधर वो रहता है? नॉर्थ पोल के साइड पे. It always indicates, I have already told you, it always indicate the north direction. Indians and Greeks have been studying the shapes and patterns of stars since ancient time. It means कि Indians, जो लोग इंडिया में रहते हैं और जो लोग ग्रीक में रहते हैं, they are known as Greeks. ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग पैटर्न्स और शेप्स के बारे में एंशियंट टाइम से ये लोग स्टडीज़ करते आए हैं, उनका नाम रखते आए हैं. बट इन मॉडर्न टाइम्स द स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स यूज पावरफुल एंड लार्ज साइज टेलीस्कोप टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़. आपने देखा होगा, कभी आप म्यूज़ियम आपको जाने का मौका मिला हो तब आपने देखा होगा शायद, टेलीस्कोप देखे हैं जिससे स्टार्स की स्टडी की जाती है. एक टूल होता है जिससे स्टार्स की स्टडी की जाती है, जिससे कि साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस रिसर्चर्स ये लोग लार्ज साइज टेलीस्कोप को यूज़ करते हुए स्टार्स की स्टडी करते हैं और सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो कुछ भी हैं उनकी स्टडीज़ करते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज द सोलर सिस्टम. ठीक है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ सोलर सिस्टम कंसिस्ट. एक तो जो मेन है, फादर हैं, वो हैं सन, एंड उनके जो 8 बच्चे हैं, दे आर the planets. Okay, the sun and its companion celestial bodies constitute the solar system. तो सन और 8 planets मिलके क्या फॉर्म करते हैं? solar system. Okay, the 8 planets, their companion satellites, asteroids and comets are the member of the solar system. और कुछ लोग हैं जो members हैं solar system के. They all revolved around the sun on their fixed path are called orbit. We have already studied about orbit. sun और जो 8 planets हैं वो एक fixed path पे rotate, revolve करते हैं, घूमते हैं around the sun, और उस fixed path को क्या कहते हैं? Orbit. Okay. Now the evolution of the solar system. A question sometimes arises in our mind,
हाउ वेयर द सन एंड इट्स कंपेनियन बॉर्न। कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि अच्छा ये अर्थ कैसे बना है, ये सन कैसे बना है, ये जो कंपेनियंस हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ में ये सब कैसे फॉर्म हुए हैं। ओके, सम scientists believe that a giant cloud of gases and dust called the nebula, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि गैसेस का एक बड़ा जाइंट राक्षसी टाइप का जाइंट क्लाउड बादल गैसेस का और डस्ट का मिलके एक नेबुला फॉर्म करते हैं किए होंगे, जो appeared moving in the space about 4.6 billion year ago, 4.6 बिलियन सालों पहले ये नेबुला बना होगा। इट कूल्ड, जब ये ठंडा हुआ, एंड गेन वेरी फास्ट रोटेशन, और बहुत फास्ट रोटेट किया। द 8 balls ऑफ गैसेस, जो 8 गैसेस के बॉल्स थे ऑफ डिफरेंट साइजेस वेयर सेपरेटेड फ्रॉम नेबुला, ये नेबुला से अलग हो गए। क्या नेबुला से अलग हो गए? 8 balls ऑफ गैसेस, एंड वो क्या बन गए? दे बिकम द planets. Okay, the remaining central mass of the nebula changed into a star known as the sun. उसके बाद जो बच गया सेंट्रल मास, ठीक है, जो एक मास समझते हैं ना, मास क्या होता है? ओवरऑल और कलेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है, ह्यूज समझ लो तुम लोग। ओके, तो जो सेंट्रल मास बच गया नेबुला में, वो क्या चीज़ में चेंज हो गया? दैट इज चेंज इनटू स्टार नोन एज द sun. Sun is also a star. Okay, the other 8 balls changes into planets. Okay, it is believed that the satellites were formed when small ball of gases separated from the central mass and were attracted by their companion planets. They began to revolve around the प्लैनेट्स। ऐसा बिलीव किया जाता है कि सैटेलाइट्स कैसे फॉर्म हुए होंगे? स्मॉल बॉल ऑफ गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम द, जो सेंट्रल मास से छोटे छोटे बॉल्स ऑफ गैसेस सेपरेट हुए होंगे, वो जाके क्या बन गए होंगे? सैटेलाइट्स बन गए होंगे, जो कि रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स के अराउंड, ठीक है। ओके, नाउ डू यू नो, पढ़ लेती हूँ एक बार। द वर्ड प्लैनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनस थाई विच मीन्स वंडरर। प्लैनेट जो है वो कहाँ से डिराइव्ड किया गया है, निकाला गया है? ग्रीक वर्ड है एक प्लैनस, थाई का मतलब होता है वंडरर्स, घूमने वाला। ओके, नाउ द वर्ड सैटेलाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटेलाइट विच मीन्स एंड अटेंडेंट। अटेंडेंट कौन होता है? किसी को अटेंड करने वाले को अटेंडेंट कहते हैं। तो सैटेलाइट भी एक लैटिन वर्ड है, इंडियन वर्ड नहीं है। ओके, द वर्ड सोलर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोलरिस विच मीन्स सन। ये सोलर जो है ये कहाँ से डिराइव किया गया, कहाँ से निकाला गया? एक लैटिन वर्ड है सोलरिस, जिसका कि मतलब होता है सन। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द सोलर सिस्टम। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट हमने आज डिस्कस किया है, द प्लैनेट अर्थ एंड सोलर सिस्टम में गैलेक्सी, देन कॉन्स्टलेशन किया एंड द सोलर सिस्टम किया। ओके, इसके बाद आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, यू हैव टू MCQ टाइप क्वेश्चंस। ओके, आपको वो सॉल्व करके मुझे दिखाना है, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको ये चैप्टर कितना, ये पार्ट कितना समझ में आया। तो इसके बाद रिज्यूम करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, thank you children.